हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जहां पे मेरे साथ है दी ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर 110। इट्स नॉट अ फेसलिफ्ट ऑफ द 125, कंप्लीट न्यू गाड़ी है टीवीएस की तरफ से द जुपिटर 110 110। अभी क्या क्या चेंजेस किए गए हैं? द होल स्कूटर हैज बीन चेंज्ड कंप्लीटली, द चेसी हैज बीन चेंज्ड, द फीचर्स हैज बीन लोडेड, द लुक्स हैज बीन चेंज्ड एज कंपेयर टू द अर्लियर 125। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीज़ें नई एड ऑन की गई है, प्राइसिंग क्या क्या है, चलाने में कैसे, सब कुछ कवर करने वाले हैं। ओके, तो चाबी से स्टार्ट करते हैं। चाबी जो है इट्स मोर और लेस द सेम लाइक दी 125 जुपिटर, सो नॉर्मल रेगुलर scooter key which has been provided from TVS in the Jupiter 110. So no smart key, no flip key, nothing. Completed stuff has been carried out. So TVS name on the front of the key, TVS logo at the rear. So two keys of course, primary and the secondary, spare key जो भी आपको हो. So let's insert this because we need to insert this key to start the scooter of course. Before coming to the scooter, let's come to the specs of the scooter because a lot of changes has been made, not really as in like हाँ but changes हुए हैं. So the length is around 1.8 meters, width is 663 mm, height is 1.1 meters, the wheelbase is 1.2 meters which is slightly increased, the height has been reduced slightly. So the ground clearance is huge, so it's 163 mm. 3 variants on offer, base, mid, top, like the car only. हाँ ऐसा ही कुछ किया गया है. And 6 colors on offer. This color is my favorite. पसंद आ गया यार, बहुत ही मस्त कलर है. देयर इज वन मोर कलर विच इज अ काइंड ऑफ डार्क सॉर्ट ऑफ थिंग, पर्पल सॉर्ट ऑफ थिंग, ऐसा कुछ है. दैट इज मोर attractive of course. So 6 colors on offer, 3 variants on offer. So let's come to the front of the scooter of course. So TVS logo, no name has been embedded now. TVS logo पूरा एकदम क्रोम में दिया गया है. This one thing is in chrome. TVS name is in chrome except this. All chrome bits has been removed and thrown away in dustbin. Yeah, so the chrome bits has been removed completely. So ना honestly ना मुझे chrome बिल्कुल भी पसंद नहीं. I like piano black and that's why piano black has been given. So piano black treatment on the windshield, wind guard also, the piano black treatment has been given. These headlights are projector, high beam, low beam both. Projectors, smart connect, so Bluetooth connectivity जो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में. So number plate holder, this is the main highlight of the Jupiter 110. Connected DRLs which multi-function of course. If I give the side turn indicator now, this function as the side turn indicator also. But in the base model now, you get this side turn indicator strip in halogen and this connected DRL now is not there. Just a black sort of strip has been given. So base model doesn't get the DRLs. Top model mid gets the DRL and Saturn indicator is in LED in the top. Base में halogen bulb. Yeah, that's the stuff. So metal part, fiber. That stuff is metal, fiber. So yeah, a complete fiber and metal combination. But a lot of things now are in metal only. TVS iGo Assist, and this is a अमेजिंग थिंग दैट TVS ऑफर इन दियर स्कूटर्स ऑफ कोर्स, जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा बाद में. सो द टायर साइज हैपन्स द सेम 90 R12, 12 इंच के टायर्स. अ चेंज, बेस मॉडल गेट्स अ स्टील, या स्टील डिज़ाइन. द मिड एंड द टॉप गेट्स द अलॉयज. सो देयर आर आल्सो चेंजेस. टॉप में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं. डिस्क, ड्रम. सो दिस इज ऑफकोर्स द ड्रम. सो देयर इज ऑल्सो वन मोर विच हैज़ द डिस्क एंड द ड्रम. सो या दैट्स द स्टफ. ऐसा कुछ और कुछ चेंजेस नहीं किया गया है. नेचुरल रिफ्लेक्टर, टेलीस्कोपिक suspensions of course, and all bits has been covered properly. What a view yaar. So बारिश नहीं हो रही है. हाँ, that's the stuff. जो kick start isn't provided, but there is a provision in which you can put this kick start also. Yeah, that's a cool stuff that TVS offers. Jupiter written in chrome, lot of piano black treatment, so care has to be taken. So the same bits which I was telling now. So base model now, the tail light is in LED of course, base model maybe, but the side turn indicator now is in halogen. So it's multi-function, that is connected one. So looks amazing. TVS logo, not a logo, TVS name of course. So this is a natural reflector. Number plate will be over here. Rear suspension happens to be monoshock suspension which is 3-way adjust. Just you have to do this stuff. Okay, I'm like struggling with one hand. Okay, yeah, that's the stuff. You have to just turn this and you can adjust the suspension in 3 ways. Rear drum brakes, the rear tire size happens to be the same one, 1990 R12 alloys of course, CVT technology. So yeah, that's the stuff. Silencer is properly placed, the same position for the silencer. So center stand of course, 2 side रेस्ट, फुट रेस्ट. द सारी गार्ड इज ऑल्सो देयर, इसमें अभी लगाई नहीं गई है. द साइड फुट स्टेप इज ऑल्सो देयर विच हैज़ बीन नॉट इंस्टॉल्ड ऑन दिस. द साइड स्टैंड ऑल्सो हैजन बीन इंस्टॉल्ड, बट ये सब कुछ ना आपको मिलता है मैंडेटरी फ्रॉम द कंपनी ऑफ कोर्स. या सो यहाँ पे आप
CNG मतलब अपना जो गैस यू कैन प्लेस, TVS says हमने अभी तक रखा नहीं है. So no luggage holder over here. It has been provided over here. So it carries 3 kg maximum capacity. E20 fuel only. So and this goes all the way from here to here. Yeah, 5.2 liters of fuel tank capacity, which has been reduced as compared to the 125, of course, if I'm not wrong. So let's go to the top now. Okay, so sitting is amazing. 330 is the length of the footrest, of course, if I'm not wrong, and 3 liters of storage capacity. Bottle, mobile वगैरह आप charge कर सकते हो. Also you have a type A charging provision. So key, of course, no smart start, push start वगैरह and all that stuff. So let's come to the console. So this is the headlight, high beam, low beam, and pass by switch, side turn indicator. So this is the अबे यार दिखाई को नहीं. हाँ, this is the instrument cluster, of course, which is completely digital. The base model ना doesn't get a digital instrument cluster, of course. जो analog वगैरह होता है ना, वो needle sort of thing, you get that stuff. So this is of course the start stop, auto start stop. जब आप सिग्नल पे रुकते हो ना, the bike shuts off completely. So this is to start the bike, and also there is assist. So TVS DD जिसे हम कह सकते हैं, that's the stuff. If I need to open this fuel lead now, E20 fuel only, TVS is also in the race here. So I need to just push this, okay, just push this and turn rightwards. Opened, yeah. So 5.2 liters is the capacity of the fuel. If जैसे कि लोगों को आदत होती है ना, that they fill the petrol cut to cut range test वगैरह करने के लिए and all that stuff ना, but if your petrol filling ना exceeds the limit, मतलब अगर पेट्रोल ज़्यादा हो जाता है कभी कभार, rarely, no need to worry, यहाँ से पेट्रोल बाहर नहीं पड़ेगा. There is a provision given from TVS. There is a pipe sort of thing जहाँ से the excess petrol will flow down and without damaging the body with the petrol. Isn't that amazing that TVS has offered in the 110? And I need to open the boot now. No need to insert the key sort of thing. Just you need to turn it leftwards. Opened. Oh my god, that's huge. So the same boot space has been carried out as the 125, of course. 2 helmets can be fitted, small size, जो आप bikers वगैरह यूज़ करते हैं ना, that if you try to fit ना, वो fit नहीं होगी. A normal helmet sort of thing. So tool kit, of course, first aid kit. Yeah, that's the stuff. No LEDs, yeah, nothing sort of that has been given. So let's, okay. So the seat height is around 770 mm, if I'm not wrong. Grab handle, which is also in piano black. A lot of piano black treatment has been provided in this scooter, yeah. So care has to be taken because now it's normal. Scratches लगना is normal in the scooters, and also this has got piano black. Scratches लगेंगे, so care has to be taken, yeah. Smart Connect Assist. It's kind of Bluetooth, so you can connect your scooter, of course. Via the Bluetooth, you can find your scooter if you are lost in a parking. Also this has follow me up headlights. अगर आप उसको गाड़ी बंद करते हो रात में, अगर आप आते हो एंड यू कांट सी द फ्रंट पोर्शन, ऑफ कोर्स पार्किंग में अगर आप खो जाते हो ना, सो दिस लाइट्स विल टर्न ऑन फॉर अराउंड 100 मीटर्स. जब आप जाओगे ना, मतलब 100 मीटर्स की दूरी पे आपको दिख जाएगा, बट फॉर समथिंग सॉर्ट ऑफ सम सेकेंड्स के लिए ये ऑन हो जाएगी एंड इट विल टर्न ऑफ एज सुन एज यू गो अवे फ्रॉम द स्कूटर. समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट इज द टेक्नोलॉजी. सो पार्किंग ब्रेक्स, ऑफ कोर्स, yeah, the parking brakes also has been provided, which can release easily. The ORM placement is of course amazing. So okay, so और एक चीज़, digital instrument cluster which has modes, and in this now you can change the time, brightness भी adjust कर सकते हो. It's kind of that stuff. Also the other stuff can be controlled via the smartphone. That's a cool stuff from TVS, of course. So kind of carbon fiber finish, something sort of that, but it's not totally carbon fiber, similar to that. So yeah, these are the चेंजेस इन दी ऑल न्यू TVS Jupiter 110. चलाने में कैसी है, पिकअप कैसा लेती है, ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ करके दिखाऊंगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट राइडिंग राइट्स अवे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइडिंग दिस TVS Jupiter 110 ऑन स्टार्ट. ओके, फुल थ्रॉटल एंड ओके, ऑफ वी गो. ओके, आगे से मर्सिडीज आ रही है. ओके, एनीवेज, सो लेट्स कम टू दिस स्कूटर. सो initial pickup is amazing. So the Ico Assist, which is doing this scooter, is amazing. The initial torque it generates now, and going on the bad rambles is okay, no problem, because the suspensions at the front happens to be a telescopic suspension, and at the rear happens to be a monocoque suspension, which is 3-way adjustable. Okay, so the chassis of this scooter has been changed, but the changes नहीं किए गए. It has been made lighter in terms of the weight. So the overall weight of this scooter is around 1.4 kg. Other it is 1.1 kg. 5 kg यहाँ. Also the suspensions, also the distance also has been changed. जो कोटी होती है ऊपर की, that has been changed. It has reduced the weight again.
Okay, and the bad roads आराम से नीचे साइड से निकाल देंगे because suspensions are amazing. The visibility wise this scooter is amazing because no problem I am having till now because side view mirrors भी एकदम अच्छे से दिखाई दे रहे हैं पीछे से, मतलब कोई भी ऐसे ऑप्टिकल ब्लाइंड स्पॉट वगैरह ऐसे कुछ अभी तक नहीं है. So yeah, riding is amazing, the handling is also amazing and full throttle. Okay, on steep roads also it carries like anything. Okay, so this scooter will be the rival, will be a real rival. Left or right? Straight. Okay, so yeah, this scooter will be the real rival for Activa. ये Activa और इसीलिए मैंने बोला Activa because this scooter has a lot of stuff that Activa doesn't have in it. हाँ, इसकी वजह से ना the price is also amazing because the handling of the scooter on the curvings and bad roads ना is amazing because I can easily steer the steering, the handle of course, the handling is also good. Full stretch of anti-roll and full throttle. Complete length is around top speed है क्या आसपास 82 something sort of that, 82 है 86 जब मीटर टाइम इतना तो मुझे नहीं लगा, बट 90 के आसपास तो आराम से जाती है ये, no doubt in that. Let's put the engine specs of the scooter. 110 cc engine. In terms of the number, it has a 113 cc engine. The power it produces is around 7.2 bhp power as compared to the earlier 125 now. 7.5 था समथिंग सॉर्ट, हाँ 7.5 7.4 था, अब ये 7.2 हो गया है. द टॉर्क इज द 9.2, हाँ 9.2 समथिंग इज द टॉर्क, क्योंकि इनिशियल टॉर्क ना आपको मिलता है कहाँ, द आइगो एसिस्ट है ना, यहाँ पे इनिशियल टॉर्क एंड कोई ओवरटेक ओके ये निकालते हैं यार गाड़ी आपको. ओके, so no problem, handling and braking is amazing because this gets 4 drum brakes. There is also provision disc drum का ऑप्शन मिलता है आगे, disc पीछे drum. Base model gets drum, कोई भी provision वगैरह कुछ भी नहीं है. The base model also gets steel wheels of course. And okay, let's go. Braking is also kind of good. Emergency brake, हाँ और एक चीज़ नहीं भूलिए आप, when you are taking the scooter at high speed और आप अचानक ब्रेक लगाते हो, emergency brakes अगर कुत्ता वगैरह अगर बिल्ली वगैरह कुछ आ जाती है कभी कभार, इट्स रेयर केस, बट इंडिया में तो चलता रहता है. बट या जब स्टॉप अगर कोई रोड वगैरह क्रॉस कर रहा है, इफ अप्लाई emergency brakes, then this scooter will turn on all the hazard lights. तो वॉक अराउंड हो गया, राइडिंग पार्ट भी हो गया, गाड़ी चलाने में कैसी है सब कुछ बता दिया है. तो एक्स शोरूम की बात की जाए, ऑन रोड नहीं बताऊंगा मैं बिकॉज ऑन रोड डिपेंड्स स्टेट बाय स्टेट एंड द एक्सेसरीज, द इंश्योरेंस, द रोड टैक्स, दैट डिपेंड्स. तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा. सो बेस टॉप और जो टॉप में भी अपना ड्रम एंड डिस्क का जो ऑप्शन आता है. सो बेस की बात नहीं करूँगा बिकॉज आप डिस्क्रिप्शन देख लो. दिस वन द ड्रम टॉप मॉडल 86,850 आ जाता है एक्स शोरूम. एंड ऑन रोड की बात नहीं करूँगा मैम. एंड द टॉप जो अपना डिस्क में आता है, दिस इज ऑफकोर्स ड्रम ना, सो ड्रम 86,850 आता है. डिस्क गोज टू 90,450 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड या दिस आर द एक्स शोरूम प्राइजेस. This was the complete walk around and the driving part of the all new TVS Jupiter 110. If you like this, do share and do subscribe and follow me on Instagram and my WhatsApp channel for my daily updates. So yeah, मिलते रहेंगे एक और TVS के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.